Dr. Surinder Kaur, our judges, Dr. Sonia Sharma, Associate Professor Head of Computer Science, Ms. Meenu Rani, Assistant Professor Chemistry Department, our respected faculty members, and all our dear participants. I would also like to express my heartfelt gratitude towards our IIC convener, Institutions Innovation Council, Mrs. Vivek, and IIC members. National Technology Day marks the anniversary of India's nuclear test in Pokhran in 1998. A bold step forward in science and technology. But technology is more than machine. It's an expression of human ambition. Beside the nuclear achievement, the day also recognizes advancements in fields like space, defense, information technology, energy, and sustainability. Thank you. Now I hand over the dice to our student council. Good morning everyone. My name is Vani and she is my co-host Kashish. As you know, today we all are gathered here to showcase the best technical minds across colleges to compete, to collaborate and to celebrate. Let's hear it for all brilliant participants who have joined us from different colleges for declamations and PowerPoint presentation competitions on National Technology Day. Now, I would like to invite our Madam Principal, Chief Guest and faculty member for the lamp lighting ceremony, symbolizing the pursuit of knowledge and wisdom. Ma'am, please. Guests आने वाले on the way. Vani, 5 minutes का टाइम है आपको engage करना है सबको. Do something. So everyone, are you ready? Yes. कुछ question answers हो जाए? Related to our technology day and all. Ready है सब? Yes. Okay. So, if you throw a red stone into the blue sea, then what will it become? If you throw a red stone into the blue sea, then what will it become? Yes? Wait, it would be absolutely. Okay. So next one. Why did mushroom goes to science party? Why did mushroom goes to science party? Any guesses? Anyone? Because it's fungi? Yeah, exactly. Next question. What did volcano say to the mountain? What did volcano say to the mountain? Any guesses? दीदी कुछ नहीं होता, आराम से आ जाओ. हाँ जी girls, anyone? No one? I lava you. Okay. So next one. Why did sun goes to school? Why did sun go to school? Because he is a child. No. अच्छा, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? स्टडी और
अपनी कुछ स्किल्स, अपनी कुछ और चीज़ों को भी इन्हांसमेंट करते हैं, साथ के साथ अपने आप को थोड़ा ब्राइटर बनाते हैं, शाइन करवाते हैं। तो वही चीज़ सन के साथ भी है। आंसर के बहुत पास हो। मॉर्निंग टाइम या ब्राइट एंड शाइन। ओके, पारुल में Next one, why did the students eat his homework in chemistry class? Why did the students eat his homework in chemistry class? कहाँ है वो तुम्हारा तीसरा बंदा तेरे पे 4-5 बजे थे फोटो खींच कौन अरे आप लोग डिपार्टमेंट का फंक्शन है। अरे चलो चलो The lighting of lamp signifies the removal of darkness and the spreading of wisdom, knowledge, and positivity. अपने प्रेसिडेंट के लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे। आ जाओ, आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ स्टेज पे, कोई भी आ जाओ, वहाँ नहीं आ जाओ, तीनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चे, आप भी आ जाओ। ये वाली बात हो जाएगी और तीनों बच्चे आ जाओ। आ जाओ बच्चे, आप आओ। इसके साइड पे आ जाएंगे, उधर हो जाओ, हाफ इधर हो जाओ। हाँ, हर्ष इधर आ जाए, मैं आपके पास। Thank you, ma'am. ये पकड़ लेंगे हाँ नहीं है उनको तार दे
प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम अपना फंक्शन जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो सेलिब्रेशन हमने आज के लिए प्लान की है, दैट वाज सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। तो मनाने की ज़रूरत इसलिए है टेक्नोलॉजी डे को बिकॉज आज के समय में और पुराने समय में अंतर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही है। किसी भी फील्ड में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है कि अगर हम उनके साथ ना चले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम पिछड़ के रह जाएंगे। ये सब डेज सेलिब्रेट करने का पर्पस यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर पाएँ कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इसे अगर मैं कह दूं तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी, बट इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ साथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि अगर टेक्नोलॉजी के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो जब हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें तो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट द सेम टाइम टू, ताकि अगर इसका एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो हम ऐसा कोई इस्तेमाल ना करें जिससे आम ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ जाए। अगर आज सिचुएशन वॉर की हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम अपने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तकनीकी तरक्की के गुणगान भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, हम ऐसे डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वेपन्स का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। माना टेक्नोलॉजी बहुत कारगर साबित हो सकती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए या अच्छे कामों के लिए किया जाए, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में करते हैं कि हाँ, एक सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हमने रोबोटिक सर्जरी कर दी, जो डॉक्टर के बस में नहीं था वो भी हमने पॉसिबल कर दिया, तो इस टेक्नोलॉजी का हम गुणगान करते थकते नहीं हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को जब हम नेगेटिव साइड पे यूज़ करें तो जितनी डिस्ट्रक्शन बिना टेक्नोलॉजी के होनी है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में है कि हम इस्तेमाल इसका कैसे करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने लाइफ स्टार्ट की है अपनी, और आने वाले सालों में ये सारी सोसाइटी आप ही के हाथों में आने वाली है। तो माय मैसेज एज एल्डर टू यू इज़ कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करिए एंड सही इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करें, तो खाली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ना कर जाएं, उसके साथ साथ रोज़मर्रा में जिन चीज़ों में हम अपने पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी करें। सो अगेन, बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच वी हैव टू यूज़, हाउ वी हैव टू यूज़। और एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो आपकी रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो आई वुड सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू, not only all of you, all of us should be rational while making use of any technology, कि इससे ह्यूमन काइंड का फ़ायदा कितना हो सकता है, नुकसान कितना हो सकता है। हम पूरी ह्यूमैनिटी का अच्छा बुरा सोच के ही चलें और ईश्वर हम सबको इतनी सद्बुद्धि दे कि हम अच्छा सोच पाएँ। और आज हर घर में ये प्रेयर होनी बड़ी ज़रूरी है कि जो ह्यूमैनिटी है वो बची रहे। और ये जो टेंशन का एक माहौल बना हुआ है, इसमें हर किसी को जो भी इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे और हम अच्छाई की तरफ चलें। एंड हर तरफ अगर प्रेयर्स होंगी, हर कोई यही मांगे, मत चैनल्स देख देख के एंजॉय मत करो, ऐसे हो गया, एक्साइट भी मत होइए। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये डिस्ट्रक्शन टल जाए, शांति आ जाए, हम सब टिक के बैठ के अपना काम कर सकें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते आए थे वैसे करें, कोई डर दहशत का माहौल ना हो। बस इसी के साथ ही मैं कंक्लूड करती हैं, हम अपने फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश रहेगी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कंपेयरिंग वाले भी ध्यान रखें कि हमें अपने फंक्शन को जल्द से जल्द ख़त्म करना है ताकि सेफली सब स्टूडेंट्स अपने अपने घर पहुँच पाएँ। For your inspiring words. Now I will request Principal Ma'am to kindly present a memento as a token of respect and appreciation to our esteemed guests in recognition of their valuable presence. Ma'am, please come on stage. युद्ध के वॉर इस वजह से इधर में रहना।
गया उधर। Girls, give a big round of applause. क्या करना है? आज के दोनों गेस्ट हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रही हैं। हमारी एलुमनाई आपसे कुछ बात करना चाहती हैं एंड मैं चाहूँगी सोनिया इन सबको मोटिवेट करके जाओ कि आपके जैसे ये भी सेटल हो लाइफ में और ब्लेस करके जाइए। Respected Madam Principal, not only the Madam Principal, that is a very energetic lady of the DAV Girls College यमुनानगर। और मुझे लगता है इसके लिए जो तालियां है ना, ये तालियों की आवाज़ लिटरली थोड़ी मुझे कम लग रही है। Madam Vivek, my dear friend from the Home Science Department, and all the dear faculty members, and definitely charming, lovely faces of DAV Girls College, Yamunanagar. आप सब हैं? Charming faces हैं? Yes or no? Yes. ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। विवेक मैम का जैसे कॉल आया कि सोनिया आप आ पाएंगी, और डीएवी की तरफ से कोई कॉल आए तो सोनिया हमेशा हाजिर है। क्योंकि जैसे मैडम ने बताया, कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोलती हूँ मैं डीएवी की प्रोडक्ट हूँ। प्रोडक्ट मैं यहीं की हूँ, इन्होंने मुझे डेवलप किया है और तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो देखो आज समय, मैं मैम से भी कह रही थी कि मैडम मुझे ना यहाँ पे लेक्चर के लिए बुलाना, और मैं आने वाले टाइम में इन द नेक्स्ट सेशन क्योंकि अभी तो ये सेशन वाइंड अप हो रहा है, मैं डेफिनेटली खुद आऊँगी और मैं मैम से मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। बच्चे जो तुम्हें यहाँ मिलेगा ना, मैं रियलिटी बता रही हूँ, सिर्फ आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत है। महसूस आप कीजिए कि हम ये चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो वेव्स हैं तो वेव से जो रिजल्ट तक आना है वो आपके टीचर्स आपको पहुंचाएंगे। ये जितनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क मैंने यहाँ पे टीचर्स के अंदर देखा है ना, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। और डीएवी के प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल पर डीएवी के प्रोडक्ट छा रहे हैं। एंड यू फील प्राउड, वी द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी गर्ल्स कॉलेज। डीएवी गर्ल्स कॉलेज आवाज कम क्यों? डीएवी गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आज क्योंकि मैम ने बोला है कि समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं आप लोगों का सुनना चाहूंगी। कहने को बहुत कुछ है, बट अभी क्या है, बंदे में दम है लेकिन समय थोड़ा कम है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ये ब्लेसिंग से देना चाहूंगी, बेटा जो करो अच्छा करो, जो सोचो अच्छा सोचो, क्योंकि भगवान जी भी कहते हैं जैसा आप सोचोगे परिस्थितियां वैसे ही बनती जाएंगी। अभी भारत पाक का चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ से फील करो कि भगवान जी सब अच्छा करते, क्योंकि अगर किसी को भी नुकसान होता है तो वो भी हमारा अपना है। तो इसलिए जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, तो आपने अच्छा ही सोचना है, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your motivational and inspiring words. Now it's time to dive into the hearts of today's competition that will test wit, creativity and tech mystery. Before starting the competition, there are some rules regarding declamations and PPT also. So, rules for declamation are: time limit will be 3 to 4 minutes only. No paper reading is allowed. The participant should use either English or Hindi language, and the judgment of judges will be considered as final.
and rules for PowerPoint presentation. The participants are flexible to speak in English or Hindi. The content should not be copied. There should be maximum 8 to 10 slides. Chief guest and my dear friends, I am Isha. Today I am here to talk about the revolution that changed the way of teaching and learning. That revolution is artificial intelligence. Now let's talk about how AI is shaping the future of education, what it means for learners and teachers. AI in education, where technology meets transformation. With the help of AI, we can learn personalized learning and make it more effective. AI also helps students who have some disabilities and some language barriers, as with the help of AI, we can convert our data and information into understandable language. And it also analyzes vast amount of data and student can learn from interaction also. AI also help teachers in several ways. Let us discuss that ways. First one is that artificial intelligence can assess the grading assignments and exams, and it can freeing up teachers' time for more activities. And last one is that teacher can make educational content from AI, for example, online quiz and interactive games. As we all know that everything has both merits and demerits. Now let's talk about the demerits of artificial intelligence. The first one and the major one is job displacement. AI can replace workers like teachers and other workers, which is a cause of job displacement. Sometimes AI can cause spam also. And for use of AI, student can need high quality of data. We know that AI can't replace our teacher. AI is here to empower them, but not to replace them. AI can make education better in future, but we need to use in a wider way. At last, I would like to say that we use AI in a greater way. Thank you. Thank you, Isha, for sharing your talent and perspective with us. So be prepared to be inspired by the powerful words of Lavisha Seni with tag number 2. Give a big hand up. Young minds fueled by technology and redefining India's future. A very good morning to one and all present here. I am Lavisha Seni, and now I want to address the role of youth in technological innovation for Viksit Bharat. As we all know that India's youth are the greatest strength for India's development, with a vibrant and dynamic generation driving the vision of making India a developed nation. As the backbone of Viksit Bharat technological advancement, the youth must be equipped with cutting-edge skills, innovative thinking, and global connectivity. Moreover, youth are often among the first to adopt new technologies. Innovative thinking and global connectivity are must. As digital natives, they are well versed in the latest technologies and trends, enabling them to develop innovative thinking to complex problems. With the entrepreneurial spirit, adaptability, and willingness to take risks, young innovators are poised to revolutionize industries and transform the way we live and we work. By harnessing their potential, we can unlock many of the new opportunities for economic growth, social impact, and sustainable development, ultimately shaping
bright future for generation to come. Notwithstanding the opportunities, there are some drawbacks also that can impact the effectiveness of youth in an effective manner. So, firstly, brain drain. India's youth talent may migrate to other countries just because to gain better opportunities led to brain drain. Secondly, digital divide. The digital divide can exclude certain group of youth from participating in technological innovation. So, we should dedicate ourselves to contributing effectively to India's transformation into a global innovation hub. Together, we will shape a future where India stands tall as a beacon of progress, equality, and innovation for the way. That's all. Thank you for your attention. Thank you, Lavisha, for sharing your valuable views. Now, I would like to invite our next participant, Isha, with tag number 6. Give a huge round of applause for Isha. नमस्कार, मेरा नाम ईशा है और आज मैं आप सभी के समक्ष मानव चिकित्सा और उसके साथ ऊर्जा के स्रोतों के विषय में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग को बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव बाल जितना सूक्ष्म कोई कण चिकित्सा को प्रभावित करता है? या फिर मैं कह सकती हूँ कि मानव बाल जितना छोटा सा कण जीवाणु को नष्ट करने और उसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारी को सटीक ढंग से उपचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में। नैनो टेक्नोलॉजी एक इतना छोटा सा कण है जिसकी सहायता से हम चिकित्सा में बढ़ सकते हैं, चिकित्सा को आगे लेके जा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में इसके कई उपयोग हैं, जैसे ये इतना छोटा कण होता है जो कि कैंसर कोशिकाओं तक दवाइयों को लेकर जाता है, जिससे कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। मैं सही कह रही हूँ? इसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सही भी है, क्योंकि इसको एक स्टेज तक कम किया जा सकता है या उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन नैनो रोबोट्स की सहायता से हम इस बीमारी को शायद कम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? सही कह रही हूँ मैं? तो सुनिए कि जो नैनो रोबोट्स होते हैं ये हमारे रक्त से भी छोटे होते हैं, रक्त कणों से भी छोटे होते हैं। तो ये दवाई को सीधा ट्यूमर तक लेकर जाते हैं, जिसकी सहायता से कैंसर को कम किया जा सकता है। तो अब आप मानते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में कितना उपयोग है? चलिए मैं आपको किसके कुछ और उपयोग भी बताती हूँ। दूसरा, डीएनए और आरएनए में भी इसको पहचानने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हड्डियों जैसे संरचनाओं या हड्डियों की संरचनाओं जैसी संरचनाएं बनाने में भी इसका उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो भविष्य में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होगा, ये तो आप मानते हो। तो इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। तो अब ऊर्जा क्षेत्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने चिकित्सा के बारे में तो आपको बता ही दिया है। ऊर्जा क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है? क्या कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। ऊर्जा क्षेत्र में इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी इसमें किया जा सकता है, क्योंकि नैनो कोटिंग या फिर नैनो फास्फोरस एलईडी बल्ब, चलो आपके घर का ही उदाहरण ले लेते हैं। एलईडी बल्ब तो सबके घरों में होंगे। ये एलईडी बल्ब नैनो फास्फोरस नैनो कोटिंग्स, इससे क्या होता है कि एक तो ये लंबे समय तक चलते हैं और अधिक रोशनी प्रदान करते हैं।
ऊर्जा उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। सौर ऊर्जा, इसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र या फिर चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं, हमारे अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना या इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पर्यावरण को साफ रखने में भी किया जा रहा है। अब मैं एक भाषण के माध्यम से तो आपको सब कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन अंत में यही कहूंगी कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद। Thank you, Isha. We appreciate your dedication and hard work. Now, let's give a big round of applause for Prerna with tag number 7. Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought, said by Dr. APJ Abdul Kalam. I am Prerna, student of BSc Biotech. I am not here just to deliver a speech. I am here to express a thought, a shared vision. I am going to speak on a meaningful topic, that is the path of innovation and sustainable, the power of indigenous technology. So, what is indigenous technology? Indigenous technology means the knowledge and techniques developed by local peoples by their experiences, culture and environment. These are not just old ideas, these are smarter, practical and most importantly sustainable. In India, we have many examples like step wells in Rajasthan, which stores water without electricity, and the bamboo irrigation system. Take this legacy very much forward to developing India to the Viksit Bharat. At last, I want to rest my speech and say that we have to take the actions now. It's enough of the time to sit at the edge of the cliff and just watching the technology evolve. It's now our turn to get into the field and make the Indian tech win. At last, I want to rest my speech with my mother tongue and quote as कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून हिंदुस्तान का, राम और शाम का, जगत गुरु और देव गुरु राजपूती शान का। तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, के उठो जवान अब देश की वसुंधरा पुकारती पुकारती है माँ भारती। धन्यवाद। Thank you, Palak, for making the content so engaging. Participants, you are requested not to reveal your college name, okay? So now, let's welcome our next participant, Nishtha, with tag number 10. Please give a huge round of applause. नैनो विज्ञान का जादू ऊर्जा और स्वास्थ्य की दुनिया में एक नया भविष्य कर रहा है। Good morning everyone. I am representing tag number 10 and today I am in front of you all to represent a declaration on the role of nanotechnology in the world of medicine and energy. So first of all, let us dive to the importance of nanotechnology in the world of medicines. Can you imagine a world where the diseases get defeated before they get rooted? A world where doctors can only target the cancer cells without harming the healthy ones? A world which starts from healing at molecular level. This is the power and the promise of nanotechnology. But now the question arises that why it is important? Because the traditional medicines has limitations. Chemotherapy kills the cancer, yes, but it also kills our body. Antibiotics can cure the infection, but they also resist the bleeding.
nanotechnology is very useful in diagnosing the symptoms before they even appear. The nanotechnology engineering is very useful in maintaining the decorum of all the human beings. Can you imagine that gold nanoparticles can only target the tumor cells without even harming the healthy cells with laser, and the nano sensors which can detect the diseases with a single drop of blood? With this, we come to an end with the role of nanotechnology in the world of medicines, but it's not the ending. It's the beginning. Let's go into the depth of the role of nanotechnology in the world of energy. Tiny particles, tremendous power. Imagine the batteries that last 10 times long, and the solar panels that serves the whole cities with minimal use of sunlight. Your cars are running with hydrogen and the air remains crisp and clean. Can you imagine that world? That would be so nice, the air clean, no pollution, nothing around. Now let's move on to the solar panels. The traditional solar panels only serve us with less energy with a huge amount of sunlight. But with the help of nanomaterials like quantum dots and nanowires, they can increase their efficiency. And these microscopic wonders can also work with low light energies. With the help of nanotechnology, solar energy is becoming the primary part of energy in our world. And what about batteries? You charge your devices daily, night? We will wake up and use our devices, but it would be very exciting to know if the solar cars are traveling 1,000 miles with a single charge and your phone lasts for days. Yes, it's possible. With the use of graphene and silicon nanowires, it lasts for days, and even the dirtiest part of energy like fossil fuels are getting cleaned by nano catalysts. So don't be afraid of scale nanotechnology, because the tiniest particles can cure the greatest plague of our world, and the smallest invention in the world of science can cure the largest number of livings. In the end, I would say that let's honor what is small, for in its depth we stand tall. In every nano, hope resides, a future bright, size the dice. Thank you everyone, have a nice day. Thank you, Nistha. We really appreciate your efforts. Now, please welcome our next contestant, Ojasvi, with tag number 13. Tingy Tech Big Impact. The power of nanotechnology in medicine and energy. Good morning everyone. I am Ojasvi, and let me ask you something. What if I told you that the future of medicine could fit inside a single droplet of water, or that the key to clean and limitless energy is not in giant machines but in structures smaller than a virus? Sounds unbelievable. Welcome to the world of nanotechnology. The science of small that is making huge differences in our lives. Let's start with medicine, because what's more important than saving lives? Today, millions of people suffer from diseases that are either detected too late or treated in the ways that harms the body as much as the illness itself. But thanks to nanotechnology, we are entering a new era of healthcare. The era where diagnosis is faster, treatment is smarter, and cure is more precise than ever before. Imagine a cancer patient. Instead of painful chemotherapies that affects both good and bad cells, nanotechnology delivers medicines directly to the cancer cells without touching the healthy tissues. Or picture a narrow sensor so sensitive that it could detect deadly virus even before the symptom shows. This isn't fantasy. It's already being tested in our labs and rolled out around the hospitals in the world. But the best part, it's only the beginning. Let's shift gears to something as critical: energy. Our planet is crying out for change. Fossil fuels are draining resources and polluting the air. But nanotechnology
nanotechnology is offering clean and bold alternatives. Thanks to nanotech, solar panels are becoming lighter, cheaper, and more powerful. Batteries are becoming smaller, storing more power, charging in minutes, and lasting for days. Even fabrics and paints are engineered to clean themselves, repel the heat, or capture the sunlight. In other words, we are not just building a better future. We are better technology, we are building a better future. So, here's the catch for nanotechnology to truly change the world. We need more scientists in our labs. We need awareness, we need understanding, and we need people like you to join the revolution. And because the nanotechnology may be small, but its power is limitless. Thank you. Thank you, Ojasvi, for sharing your talent and perspective with us. Before moving to our next event, it's time to do something interesting and make a big change. With this, I want to invite Manna, Tia and Prachi for dance performance to entertain you all. Please welcome them. Let us see. Indigenous technology. Next please. It refers to systems of knowledge and tools passed down over generations which are developed by the local communities to solve the local problems using the locally available resources. And needless to say, they are built using native materials which are tailored to the local environment. For example, the terracotta water filters in Odisha, India, the natural herbal pest repellents used in tribal agriculture, and the step wells, or as they are more popularly known as, the baulis, which are used for water storage in arid regions. You can have a look at these pictures as well. So, the previous slide please. Now, one may ask that what is the need for these indigenous practices in today's so-called modern era? Let me clear out one thing. These practices are not anti-modern, rather they are parallel tools for innovation. These practices are eco-friendly, they are culturally grounded, affordable and low energy, and most importantly, since they are tailored to the local environment and often based on circular economy, they are sustainable for us, for our environment and for the planet. Thus, they are not just practices, rather they are the need of the hour. Next please. Now, fortunately for us, India is a land rich in such indigenous practices and knowledge. After all, we come from the culture that teaches of Vasudhaiva Kutumbakam, right? So let us have a look at the real world examples of such indigenous innovation. For example, previous slide please. We have the Johars in Rajasthan. These are small earthen dams built by villagers for rainwater harvesting. These help in recharging groundwater and they help in drought-prone regions. The village of Lapodia is a great example. They revived 5 Johars and turned a dry region green. Next please. We have the example of zero-budget natural farming. I'm sure many of us who come from villages have seen it. No pesticides, no chemical fertilizers, only natural materials used like cow dung, natural microbiomes, etc. And most importantly, these practices help in soil health and biodiversity. Next please. Some more examples include the mud homes in Kutch. These mud homes regulate temperature by themselves. In summers, they maintain coolness and in winters, they maintain the warmth inside. The bamboo houses in northeast India. These are earthquake resistant and built without nails, using binding techniques passed down over generations. And the Ayurveda and herbal remedies that we all use in our everyday lives. I'm sure we are very well aware about that.
So next slide, please. And may I also state that these are often scientifically validated as well. So I think we all have heard about Sri Rajendra Singh. If not, I invite you to dive into the story of the waterman of India. Next slide, please. In 1980, Sri Rajendra Singh came to Rajasthan. A social worker, he revived over 7 rivers and over 11,000 water bodies in drought-prone areas. And how did he do that? Well, he did not bring any machinery. He brought people together. He revived the Johar system in that area and he trained the local villagers in building these with mud, stone and traditional knowledge. And the impact, you may ask? Well, the groundwater level rose by 6 meters. He turned many deserted villages into habitable areas and so many dried rivers like Arwari, Sarsa and Bhagli that were dry for decades started flowing again. One man, one indigenous technique and thousands of lives transformed. Here I want you to ask yourself this question. If one man can have so much impact, how much impact can we as a society and as a nation can bring if we all join hands? Next slide, please. Now, not only this, indigenous techniques are also a key for sustainable development. In fact, they contribute directly to some of the UN's Sustainable Development Goals. For example, the Sustainable Development Goal number 6, which stands for clean water, the SDG 12 for responsible consumption, and the SDG 13 for climate action. And needless to say, these practices promote Atmanirbhar Bharat and the decolonization of science. Next slide, please. Now, the question that we all have to ask ourselves today is, what can we do? Well, the answer is a lot. We can do a lot. By taking small steps, we can revive the future by remembering the past. For example, use natural cleaning agents. You must have heard your elders saying about Amla, Shikakai, Rita, Multani Mitti. Those are not just sayings. Those are true. We can use them instead of chemical cleaning agents. We can use clay and copper utensils for cooking and replace the aluminium utensils. And practice indigenous wellness techniques. Oil pulling, Nasya, Surya Namaskar, and as we have heard and seen our elders practicing, walk barefoot in grass. These are not just sayings, these are not just random techniques, they are all part of Indian wellness science. They maintain immunity and mental peace naturally. Next please. These are not backward practices. They are forward thinking, resource smart solutions. Now, what does our way forward include? How do we proceed from this? For one, we need to document and digitize traditional knowledge. When the University of Nalanda burned, the entire knowledge within that university also burned. So we need to digitize and document the traditional knowledge to preserve it. Next, we need to empower local innovators with policy and funding. Yesterday only, I was traveling in a bus and saw a man selling an Ayurvedic remedy, which was for teeth pain and teeth whitening. Now, in the last 40 years, he has claimed a miraculous result. That one single man. Imagine the scale on which he could bring an impact if only he had the right exposure and the funding. So this is one thing that we must do. Bridge indigenous and modern technique. Not either or, but a bridging of both the systems. This is not a debate about modern versus indigenous. This is a step towards modern and indigenous. And we need to celebrate the fact that our past holds the key to the future. Next please. Innovation grows best when its roots run the deep. Next. Today, when you leave this place, no matter what the results of the competition are, I want you to remember something. That every act of revival is an act of resistance as well. Resistance against waste, resistance against greed, and resistance against forgetting.
Thank you. Namaste and Jai Hind. Thank you, Kushi. Your clarity and confidence truly stood out. Next, we have Isha with tag number 6. नमस्कार, मेरा नाम ईशा है और मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में बताने जा रही हूँ। क्या कोई बता सकता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? हाँ, पानी। जल हमारे केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र का आधार भी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम किस प्रकार जल को बचा सकते हैं? या क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम जल को बचाकर रख सकते हैं? कभी सोचा है आप सबने ये? तो आज मैं आपको एक ऐसी ही तकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि हम जल का शोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी वह छोटे कण हैं, इतने छोटे कण लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर या फिर कहूँ इससे भी छोटे कण, या फिर लगभग एक सुई की नोक से 1 लाख गुना ज्यादा छोटा कण। और यही कण जब पानी में मिलकर ये प्रदूषकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे कि हम पानी को साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जल प्रदूषक और उसकी समस्याएं। जल प्रदूषण आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये केवल हमारे पीने के पानी और हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ये केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि यह जलीय जीवन के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे साफ रख सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नैनो टेक्नोलॉजी का जल शोधन में उपयोग। अब हम जानेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का जल शोधन में किस प्रकार उपयोग हो रहा है। जब इन नैनो कणों को पानी में डाला जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जब इन कणों को पानी में डाला जाता है तो इनके अंदर ये जो है प्रदूषक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे कि छानकर पानी को साफ किया जा सकता है। नैनो मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक तत्व है। नैनो मटेरियल ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि ये प्रदूषक तत्व पानी में मिलकर जलीय जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं जिससे कि जलीय जीवन की समस्या बढ़ती चली जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ खास बातें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि नैनो कोटिंग्स और नैनो फिल्टर। नैनो कोटिंग्स वो है जो प्रदूषकों को अपने ऊपर चिपकने से रोकते हैं और नैनो फिल्टर ये कुछ विशेष प्रकार के फिल्टर हैं। इन फिल्टर की सहायता से पानी से रासायनिक तत्वों को आसानी से निकालकर पानी को साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइक्रोप्लास्टिक को घटाने से heavy metal compounds from dyes, paints, fertilizers, pesticides and pharmaceutical waste. Here are the many more mechanisms. Absorption of heavy metal dyes, photocatalytic degradation of organic pollutants, antimicrobial action of pathogens. Next slide please. What is photocatalysis? There are various conventional and modern methods available to curb the growth and removal of these harmful pollutants such as chemical methods, physical and psychochemical methods. But photocatalysis possesses several advantages such as complete degradation of pollutants, possesses no secondary pollution, environment friendly and reusable. This is the basic mechanism of photocatalysis. Next slide please. Photocatalysis. The semiconducting materials which show photocatalytic activity upon conservation of irradiating light energy into chemical energy of electron holes pair are known as photocatalysts. Next slide please. This is the mechanism and applications of nanotechnology towards aquatic waste, treatment of pharmaceutical wet waste, heavy metals removal and dye degradation. Next slide please. And at last, I am thankful to present here my views on the topic.
Thank you. Thank you. Next we have Vanshika, tag number 11. A very warm good afternoon to my respected teachers, to respected jury members and my fellow students. This is Vanshika Kamboj with tag number 11 in front of you, and today feeling so happy and proud to share the knowledge that I have gathered by working on my topic. Today's my topic is Power of Indigenous Technology, a part of innovation and sustainability. Before going deep into the conversation, let me first tell you the meaning of sustainable technology, and you can say sustainable development, because this term is nowadays used by various ministries, various countries and even UN as well. Next slide please. Next. So, the meaning of sustainable development. Sustainable development refers to meeting the needs of current situation without jeopardizing the needs of the future ones. And this is in this world of climate change, this is urgent need and urgent demand. As we all know that UN has come up with 17 sustainable development goals, ladies and gentlemen, and each and every nation which is a member of United Nations is running in this marathon to complete their sustainable development goals, as well as India is also a member, a part of this marathon. But there is a twist. India has said that it will complete all its sustainable development goals with its initiative like Make in India, because we want to show the world that innovation is possible with sustainable development. Next slide please. So let's start with our very important sector, that is agriculture, because India's 60% population, ladies and gentlemen, is dependent on agriculture. And with immense pride I want to say to everybody that from a food deficit nation, now India has become one of the leading producer, exporter of all the agriculture products in the world. Now we are focusing on our sustainable development, our sustainable agriculture by using various indigenous technologies, ladies and gentlemen. I repeat, various indigenous technologies like uses of drone. I think everybody has heard about drone Didi scheme. We are using our indigenous technology in our water management system, in using our indigenous irrigation systems for water management. And this is not the end, this is the beginning. We are having advancement in our biotechnology as well, because we have made various genetically modified crops, and the best example is BT cotton. As I said, next slide please. As I said that this is not the end, this is the beginning. Let me tell you about the next sector where India is doing tremendous growth, that is bioeconomy. Now what does bioeconomy means? Bioeconomy refers to the use of biological resources, everybody. Biological resources to produce goods, services, energy, but it promotes economic growth as well as sustainability. Sustainability I am saying. And I want to tell with immense pride that this sector, India's bioeconomic sector, had listed India in the list of top 5 bioeconomies in the world. And if this happened, it doesn't happen with some American technology, with the use of some Russian technologies, with the use of some French technologies. All this has happened with the help of our indigenous technologies, ladies and gentlemen, with our indigenous technology. The contribution of this sector in our GDP is 3.4%. 3.4%. This sector gives employment to 3.3 million people in India. And this sector produces $55 billion revenue. And this is not the end. This sector supports 550 startups in India. As I said, this is not the end, this is the beginning. Next slide please. There are other examples as well of the India's incredible achievement with its indigenous technology in health sector.
With immense pride, I am saying that India export nearly 25% vaccine in volume to WHO. And let me tell you, all these vaccines are indigenously made, everybody. All these vaccines are indigenously made. And this is not brand. With immense pride, I am saying that India has developed its first clinical trial of hemophilia A, which is a genetic disorder. Now we can say that in less cost, we can cure the genetic disorders, that is hemophilia. Next slide, please. Scientifically proven that Chenopodium and Dinospora cordifolium are used as antifungal properties. Thank you. Thank you, Arshia. Now, next we have Kwaish, tag number 14. शेयर नहीं हुआ मेरे से आपकी पीपीटी में से शेयर नहीं हुई Good morning everyone. My name is Kwaish and I am from BSc Life Sciences first year. Next slide please. आज की मेरी जो पीपीटी है वो है एंटी फंगल एक्टिविटीज ऑफ टीनोस्पोरा एंड चिनोपोडियम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो सबसे पहले एंटी फंगल एक्टिविटीज आखिर होती क्या है? It refers to the ability of a substance or an agent to inhibit or kill the fungal growth. The antifungal drugs can be extracted from some medicinal plants like Tinospora, Chenopodium, neem, etc. Next slide please. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीनोस्पोरा आखिर है क्या, ये यहाँ पाई कहाँ जाती है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसकी अपीयरेंस क्या है. अगर हम उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे हमें फायदा हो रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो दिखती कैसी है और उसका नाम क्या है. उसे हम कॉमनली जानते किस नाम से है. तो इसका कॉमन नेम है गिलोय और अमृता. It is found in subtropical and tropical regions in Asia. In India, it is abundant in Himalaya and dense forest of Chhattisgarh. It is a climbing shrub with fleshy stem, heart-shaped leaves, and it bears single-seeded red fleshy fruit. आपको यहाँ पे दिख ही सकता है, वहाँ पे गिलोय के मैंने फ्रूट्स की पिक्चर लगाई है. अब आपने मेनली इसके फ्रूट्स नहीं देखे होंगे, बट आपने कभी ना कभी एक किसी पेड़ पर एक बेल को चढ़ा हुआ देखोगे. ये जो जब मैच्योर हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, इसके लीव्स जो शेड हो जाते हैं और इसके ऊपर मेनली आपको जब ये यंग होगी तो आपको इसके ऊपर हार्ट शेप लीव्स दिखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट इज कैनोपोडियम एल्बम. इसका कॉमन नेम है बथुआ. It is found in temperate and subtropical regions. It can grow in fields, roadside, wastelands, gardens, etc. It
bears leaf of various shapes like ovate, rhomboid, diamond, etc. It can be 1.5 meter tall, stem tinged with red, small green and group dense cluster of flowers, as you can see in this picture. Next please. The antifungal phytochemicals obtained from Tinospora and Chenopodium. These are some classes of the antifungal phytochemicals obtained from the Tinospora and the Chenopodium. Alkanoids, terpenoids, flavonoids, polleins, azole, echinocandins. These are the natural derived plant compounds that damage the cell membrane, disturb enzymatic activity or inhibit the fungal growth. Next slide please. There are some examples of these antifungal phytochemicals. First is azole. It interferes into agosterol synthesis. Agosterol is a vital component of cell membrane of fungi. Next is polleins. They bind to the agosterol and cause spore in the cell membrane of the fungi. Next is echinocandins. It inhibits beta-1,3 glucan synthesis, which is a major component of cell wall of fungi. Next please. This is the mechanism of antifungal activities. The uses of antifungal phytochemicals or antifungal drugs. The antifungal drugs are used to cure skin infections, nail infections, superficial infections caused by the fungi. Tinospora extracts exhibit diverse benefits like anti-arthritics, anti-diabetic, anti-malaric, anti-hepatotoxic, etc. The juice of Chenopodium leaves is traditionally applied to the white patches on skin as it has potential to addressing skin discolorization. Their effectiveness against The results for the following activities, as you all given your best in every activities like declamation and your PowerPoint, and I know it was very difficult for the judges to judge the same. So I will start from position 3rd, tag number 13, Ojasvi of DAV Girls College, in declamation. I welcome our Virgin Principal Ma'am and along with the judges. The second position in declamation contest, tag number 7, Prerna from DAV Girls College. Tag number 10, Nishtha from GNG, securing the 4th position. Now it's the results for PowerPoint presentation. I'm starting with tag number 3. Simran from Hindu Girls College secured 3rd position. Tag number 11, Vanshika from Guru Nanak Girls College? Okay. GNG secured 2nd position. And tag number 5, Khushi from DAV Girls College secured 1st position. Kindly please give a huge round of applause to the participants and the position holders. बहन हट जा, आगे से हट जा, आगे ले आना इधर कहाँ यहाँ इनके बीच में। ओके ओके कर रही हूँ अभी। नहीं बंद नहीं कर। Declamation contest students speak. In front I call first Nishtha.
from GNG. Please give a round of applause to these students. Prerna. एक एक क्लिक कर दिया मैम यस सर Prerna. मैम मैम यस सर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर्स करवा के जाना हमारे यस सर For PowerPoint presentation, first Khushi, second Vanshika, third Simran. यस मैम यस मैम यस मैम Yes, ma'am. Thank you a lot. For their fair decisions and our audience for their enthusiastic support.